खगोल फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है बेटा। हमारा चैनल इज completely free of cost. It is you should subscribe and extend in WhatsApp, Facebook, and it would be familiar karo beta. Today I will going to start the advanced problems of electromagnetic induction. This question was asked in 2020 beta, advanced 2020, and on basic concept it was asked. See the question. Here, a light disc made of aluminum is kept horizontally, free to rotate about an axis. A strong magnet is held vertically at a point above the disc from its axis, revolving the magnet about the axis. The disc will be dash. That means rotate in the direction of direction opposite to the direction of the magnet. Rotate in the same direction of the magnet. Not rotate, its temperature remains unchanged. Not rotate, but the temperature will be slowly raises. ठीक है? तो डिस्क है बेटा, एल्यूमिनियम डिस्क है. When the magnet is rotating around this axis like this, okay, the flux associated across this disc also changes. Okay, like this. When the flux associated across the disc also changes, what happening is there, the induced EMF is developed here. Induced EMF is developed. When the induced EMF E is equal to minus d phi by dt is developed, due to that what happening is there, some eddy currents also developed. The eddy current is called as induced EMF. The induced EMF is always opposes to causes to it. So that's what happening is there. When the magnet is rotating along the direction, okay, the disc will be also rotated in the direction of the magnet. Okay, so B answer is a correct है बेटा. It's a completely what is the concept based question, ऐसा think करके करना पड़ता है. Understood or not? Next problem देखो बेटा, वो advance 2023 है. A rectangular conducting loop of length 4 centimeters, width 2 centimeters is in the XY plane as shown in the figure, and is being moved away from them. A thin conducting wire of direction of what is that, root 3 by 2 of x, 1 by 2 of y with a constant speed v है बेटा, ऐसा पुल कर रहे हैं, velocity दी है. A wire is carrying a current of I is equal to 10 amps in the past x direction. A current of 10 microamperes is flows through the loop. लूप से कितने जा रहे हैं बेटा, 10 microamperes जा रहे हैं लूप से, due to changing the magnetic flux. So when it is at a distance of 4 centimeters from the wire, the resistance of the loop is 0.01 ohms. Then the value of U would be is equal to how much, वो वैल्यू निकालना पड़ता है. ठीक है, इसमें बोलो, इसमें देखो और डिस्टेंस डी दी है, इससे इस तक पूरा डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, पूरा डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो भी 4 या प्लस 4 दिट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाता है. ठीक है. सो व्हेन a current is flows across this, what happening is that the magnetic flux associated across the coil is also changes like this. Due to changing the magnetic flux, the current is developed in the loop is 10 microamperes. इसमें resistance was given R is equal to 0.01 ohm दिए. So then find what is that we have to calculate its velocity. ठीक है बेटा. So the how much amount of induced EMF is developed in this, first one निकालो. E is equal to delta B, BLV है, जनरल कंडीशन क्या है बेटा, BL into VY हो जाता है. ठीक है, BL E is equal to BLV. B means what is the delta B है बेटा, delta B means B1 minus B2 into L into V हो जाता है. ठीक है, E मिल गया, इसमें E मिल गया ना. नेक्स्ट I is equal to क्या निकालना पड़ता है बोलो, बट B is equal to what is it, B is equal to mu naught I dash by 2 pi r निकालो इसमें. ठीक है, B1 को क्या मिल जाता है बोलो, E is equal to mu naught I by 2 pi r कॉमन करो, mu naught I dash अपन 2 pi कॉमन करो, 1 by 4 minus 1 by 8. L into V वैल्यू कितना बेटा, V वैल्यू is V into
y, ओके, l इंटू b हो जाता ना ऐसा। सो I इज इक्वल क्या हो जाता है बोलो, I इज इक्वल टू E अपॉन R है बेटा, दैट इज म्यू नॉट वैल्यू कितना हो जाता है बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट इज अ 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 अपॉन 2 पाई इंटू I डैश वैल्यू 10 दी है, ठीक है, इस 1/8 सॉरी 1/4 माइनस 1/8 इंटू 2 इंटू वी वाई का बराबर हो गया, 2 इंटू वी वाई का बराबर हो गया बेटा इसमें, ठीक है, 2 इंटू वी वाई, 2/1 जो 2/2 से नेक्स्ट कैंसिल हो गया इसमें, ओके ठीक है। आई वैल्यू कितना बेटा, आई इज इक्वल टू आर वैल्यू है, आर वैल्यू भूल गए, 0.01 मीन्स क्या हो जाता है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाता है आर वैल्यू, ठीक है। आई वैल्यू दिया, आई वैल्यू कितना है बेटा, आई वैल्यू इज 10 माइक्रो एम्पियर्स, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर्स इज इक्वल टू 2 2 is 4y इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 10 टू द पावर ऑफ -7 क्या हो जाता है बेटा, 10 टू द पावर ऑफ -5 10 एक गेट कैंसिल है, 10 टू द पावर ऑफ -6 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/8 इंटू 2 वी, इसे वी इज इक्वल टू 2 मिल गया, 2 मीटर पर सेकंड, इसको क्या दिया यूनिट्स 2 मीटर पर सेकंड है ना, कांस्टेंट स्पीड 2 मिल गया। सो देखो प्रॉब्लम से क्या लिख रहा हूँ, वो v वैल्यू दिया, v इज इक्वल क्या है बेटा, √3/2 ऑफ x प्लस 1/2 ऑफ y दिया, इसमें tan थीटा इज इक्वल क्या लिख रहा हूँ बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, दैट इज इक्वल टू 1/2 √3/2 को बराबर हो गए, दैट इज इक्वल टू 1/√3, दैट इज vy अपॉन vx, ठीक है। vx इज इक्वल क्या मिल गया बेटा, vx इज इक्वल टू √3 इंटू vy, दैट इज इक्वल टू √3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू vx मिल गया बेटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कैसा आता है बोलो, v इज इक्वल टू √vx² प्लस vy² का बराबर है, vy इज इक्वल कितने मिल गया 2 मिल गया, vx इज इक्वल टू कितने मिल गया, दैट इज इक्वल टू √vx², दैट इज 2√3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है बेटा, दैट इज v इज इक्वल टू 4 मिल गया 4, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम है और 2023 ऐसा सोच के करना है, अंडरस्टूड और नॉट। देखो बेटा, ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए, resistance capital R is fixed on a horizontal xy plane with a center of the loop of a solenoid. The solenoid has a m turns per unit length and carries a current of I counterclockwise. The magnetic field due to the solenoid is n direction है बेटा, n direction ऐसे, direction of the magnetic field भी ऐसा है बेटा, okay. Least one gives depends upon the n in terms of a constant angular frequency omega. Least two gives the torque experienced by the circular loop at a time t is equal to t/6 omega. Let alpha is equal to a square mu naught square m square I square omega square by 2 आ रही है बेटा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, वो शॉर्ट ट्रिक में प्रॉब्लम करना पड़ता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, 1/√2 sin of omega t of j cos of omega t of k। इधर देखो ये जिसका k ना वेक्टर ऑफ k ऐसा होता है, सर j ऐसा रहता है, j ऐसा रहता है, ठीक है। सो वो सिलेंडर कैसा वाइब्रेट कर रहा है बेटा, ऐसा एंगल वेलोसिटी ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इन द z y प्लेन में ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, therefore डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा रहता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट m बार रहता है। सो tau is equal to what is the tau is equal to m क्रॉस b हो जाता है ना, m ऐसे है b ऐसे है, सो इसके लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाता है बेटा, टॉर्क एक्ट हो जाता है, ओके ठीक है। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
वो भी माइनस नेगेटिव एक्स एक्सेस है। सो इन द फर्स्ट केस में क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट केस में द टॉर्क वुड बी माइनस नेगेटिव एक्स एक्सेस, माइनस एक्स एक्सेस। माइनस एक्स एक्सेस मीन्स क्या होगा, इसमें देखो माइनस अल्फा बाई 4 मीन्स इसको क्या लिख रहा हूँ, अल्फा बाई 4 इंटू माइनस आई है। सो वो इसको बराबर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो सेकंड ऑप्शन, सेकंड लिस्ट में क्या दिए, 1/√2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ऑफ आई कॉस ऑफ ओमेगा टी ऑफ जे, कॉस ऑफ ओमेगा टी ऑफ जे। आई का जे दिए बेटा, ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, आई ऐसे है, ठीक है, जे ऐसे ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा वाइब्रेट कर रहे तो क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो। सेकंड केस में बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो जीरो हो जाता है बेटा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो हो जाता है सेकंड केस में। 1/√2 into sin of omega t of I plus cos omega t of j is which is equal to p tends to 0 हो गया। नेक्स्ट थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या हो गया, 1/√2 into sin of omega t of I and cos of omega t of k हो गए, cos of omega t of k हो गए। I कामा k मीन्स I ऐसे है, वो k ऐसे है, इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, वो प्लेन में एक्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ट्राविस को किधर एक्टिव हो जाता है बेटा, ट्राविस को किधर एक्टिव हो जाता है, इसमें थर्ड केस में टावी इज इक्वल टू प्लस जे ऐसा, टावी इसका प्लस जे के एक्ट हो जाता है बेटा। प्लस जे मीन्स क्या हो गया बेटा, प्लस जे मीन्स वो भी प्लस जे हो गया है। सो थर्ड वन इसको मैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन क्या दी है, और लिस्ट वन में फोर्थ वन 1/√2 cos ऑफ ओमेगा टी ऑफ आई साइन ऑफ ओमेगा टी ऑफ के दिए बेटा फोर्थ वन में। सो इसमें टॉर्क किधर एक्टिव हो जाता है बेटा, ऐसा टॉर्क ऐसा, दैट इज इक्वल टू फोर्थ केस में टॉर्क इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सेस, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सेस क्या होगा बेटा, वो हो गया, ठीक है। ऐसा राइट हैंड रूल का यूज करने के बाद डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क निकालने के वो मैच करना पड़ता है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, वो एडवांस 2022 है, अंडरस्टूड और नॉट। देखो बेटा 2021 का एडवांस है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ I is equal to 2 amperes. A semicircular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails, negligible resistance. Both rails are parallel to each other. A wire on the nails and rod lies on the same horizontal plane. Two ends of the semicircular rods are at a distance of what is that, 1 centimeters and 4 centimeters from the wire. At time t is equal to 0, the rod starts moving on the rails with a speed of 3 meters per second. A resistor of 1.4 ohms and a capacitor C0 is equal to 5 microfarad are connected in series between the rails at t is equal to 0. C0 is uncharged. Then find the maximum current flowing through the resistor and the maximum charge in US on the capacitor है बेटा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, तो करंट ऐसा जा रहा है ना, लेट बी स्मॉल एलिमेंट का पार्ट ले आर दूर पर, नहीं तो एक्स दूर पर स्मॉल एलिमेंट dx ले when a current is flowing across the conductor, what happening is that the magnetic field associated across the circuit is also changes like this, okay, ठीक है। So let be a small element dx at a distance of x, so from this current carrying conductor ऐसा, ठीक है। So the induced EMF is given by d is equal to क्या लिखना पड़ता है बोलो, d is equal to actual BLV means dB into L into B को बराबर हो जाएगा ना,
डी वी इंटू एल इंटू वी के बराबर हो जाता है। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स और लेंथ का डी एक्स ले इंटू वी एज इज। इसको इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई v इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इंटू डी एक्स। इनिशियल लिमिट क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर से फाइनल लिमिट इज इक्वल 4 सेंटीमीटर से 1 to 4 लिमिट्स हो गए। दैट इज डी क्या मिली है बोलो, E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटू एल एन ऑफ 4/1 मिल गया। ठीक है, तो पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसमें क्या मिल गया, म्यू नॉट वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 to the power of -7 इंटू सो आई वैल्यू कितने मिल गया बेटा, आई वैल्यू कितने बोलो, आई वैल्यू इज 2 इंटू इसमें 2 दिए ना और 2 एम्पीयर दिए, 2 एम्पीयर दिए इसमें, 2 एम्पीयर चल रहा है इसमें। 2 इंटू वी वैल्यू कितने 3 मीटर पर सेकंड बाई 2 पाई हो गए, 2 पाई इंटू एल एन चारों हो गए बेटा। इसको 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा कैंसिल हो गए। इसके वैल्यू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power of -6 वोल्ट्स मिल गई। इसमें क्या निकालना पड़ता है बेटा, आई मैक्स कितना, आई मैक्स V इज इक्वल आर, आई इज इक्वल टू आर, आई मैक्स इज इक्वल क्या हो जाता है बोलो, E अपन आर का बराबर हो जाता है। E वैल्यू कितने 1.6 इंटू 10 to the power of -6 अपॉन आर वैल्यू कितने दिए बेटा 1.4 दिए, 1.4 दिए। दिस इज जस्ट कैंसिल आउट, दैट इज कॉल्ड 1.2 इंटू 10 to the power of -6 एम्पियर्स मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना पड़ता है बेटा, नेक्स्ट वी हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्यू मैक्स इज इक्वल क्या हो जाता है बोलो, क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई। सी नॉट वैल्यू कितना बेटा 5 माइक्रोफैराड, दैट इज 5 इंटू 10 to the power of -6। ई वैल्यू कितने मिल गए बोलो 1.6 इंटू 10 to the power of -6 हो गए। इसके लिए क्या मिल रहा है 8.4 इंटू 10 to the power of -12 कूलम्स। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ऐसा सोच के करना बेटा। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। लिखो देखो बेटा, वो एडवांस 2016 है, सेम प्रॉब्लम 2024 में पूछे। ओके, ऐसा ऐसा करना देखो। इससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी, इससे रेक्टेंगुलर रूप ऑफ लेंथ L and radius R which is slowly moving into a uniform magnetic field. When the loop is entering into the field, what happening is that the flux associated across the loop is also increased. When the flux associated across the loop is also increased, what happening is that the current will be start flows in the loop. Okay, so automatically some amount of EMF also induces here. So how much amount of the current induces, I is equal to E upon RA beta. But E value also already know what is the BLV upon R। इतने करंट डेवलप हो जाते हैं इसमें लूप में, इसका लेंथ दिया ना, इसमें इतने करंट डेवलप हो जाते हैं इसमें। इतने करंट से कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं फील्ड में, फोर्स F इज इक्वल क्या लिखना पड़ता है बोलो, F इज इक्वल टू I इंटू B इंटू L हो जाता है। IBL है बेटा, I वैल्यू ऑल्सो दिस वैल्यू और लिखो, I वैल्यू इसमें लेगा, दैट इज इक्वल टू BLV अपॉन R इंटू BL है, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R का बराबर हो जाता है। बट F को क्या लिखना पड़ता है बेटा, F इज इक्वल M है, MA को क्या लिखना पड़ता है, F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू MV इंटू A को क्या लिखना पड़ता है बोलो, dV by dx which is equal to B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R का बराबर हो जाता है।
इसमें v भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv, इनिशियल वेलोसिटी कितने बेटा v नॉट दिए, v नॉट फाइनल वेलोसिटी कितने v ले, v नॉट टू v इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म क्या हो गए b स्क्वायर l स्क्वायर r अपॉन into integration of dx, initial displacement is 0 ले and final displacement x ले। इसमें क्या मिल गया था बोलो, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r इंटू एक्स हो जाता है बेटा। इसमें v इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाए, v माइनस v नॉट इज इक्वल, इसमें v क्या मिल जाता है बोलो, v इज इक्वल टू वो इधर आने के बाद प्लस हो जाता है ना, वो भी माइनस हो गई, दैट इज v नॉट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r इंटू एक्स को बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसमें जीरो में क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल शून्य हो गया। when this loop is entering into the magnetic field, the flux associated with the loop is entering into the magnetic field, the flux associated across this coil is also increases and induced EMF also increases and induced current also flows, but velocity decreases. The velocity v naught here, when it is entering into the magnetic field, what is induced EMF is developed, the induced EMF is opposite to causes to it, so that's what it velocity is decrease here, तो इसमें velocity decrease हो जाता है up to entering, so 0 to L तक velocity क्या हो जाता है बेटा, decrease हो जाता है। When it is completely enters into the field, when the loop is entered completely into the field, the flux associated, the rate of change of flux d pi by dt is equal to 0. That means it would be moves with a constant velocity up to L to 3L. L to 3L it would be moves with a constant velocity. Okay. When it is comes outwards, what happening is that velocity is also again decrease. So first one is the correct option है। Second one बोलो, second one देखो इधर 0 to L, 0 to L तक क्या हो जाता है बेटा, इससे 0 to L को क्या हो जाता है, so current is always opposite to causes it, वो decrease हो जाता है इसमें। When it is entering, what happening is that when it is comes out like this, when it is coming outward direction, what happening is that the fluxes gradually decrease, that means current reverse हो जाता है, वो भी correct है बेटा, ठीक है। और दोनों भी क्या हो जाते हैं बोलो, वो दोनों भी रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा सोच के प्रॉब्लम करना बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट, बोलो देखो।